Jai Bharat. Good morning. Long live India. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat India on this day, 27th August 2023, Sunday. आज का दिन रविवार 27 अगस्त 2023। मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। क्वालिटी सिटीजन के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त टाइटल जो हम लोग नहीं समझते, हम गुणवत्ता को नहीं समझते। हमारे देश के नागरिक की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? What should be quality of our citizen, every citizen, and if not every citizen, at least those citizens who are responsible to serve this nation as well as whole world. Title is, very simple as usually it is said. Those citizens, if cannot understand power of citizens in Bharat India, none can change this nation to be a power in world. One has to be qualitative to make Bharat India a world level community, for which we have to think, we have to open our eyes, we have to concentrate, we have to do a lot. But these are only talks. Do we do? You see, I believe in a system where people do not talk only but operate also on contents of talk. हम खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको बात तो करनी पड़ेगी परंतु उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो हमारी बात करने का क्या फ़ायदा? It's only for sake of talking, then there is no meaning of talk if it cannot be converted to, or contents of talk cannot be translated or transformed into practical aspect. When I talk of quality, I talk of something very different. Quality doesn't mean testing only. This means you have to understand every part of quality in totality. What does it mean? गुणवत्ता कहने को तो बहुत अच्छी लगती है कि क्या गुण है आप में, what quality do you have, what specifications do you have, what type of person you are, what do you think about this, how can you concentrate, how can you reach, how can you coordinate. So many aspects come into picture, into play when we talk of quality. But quality is something different, because if we don't have quality, then there is no meaning of quantity. If I don't have quality in myself, in personality, in my performance, then my being or not being doesn't mean anything. I perform something which does not give a person who use my performance whatever is expected of me. In that case there is no meaning of performance. अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि ये इसके काम से मुझे ये बेनिफिट हो सकता है या मुझे ये अचीवमेंट हो सकता है या मुझे ये सर्विस मिल सकती है, और यदि वो सर्विस उसको नहीं मिलती तो उस काम करने का उसको क्या फ़ायदा हुआ मेरे को देने का, या मैं करूँ उसके लिए उसको काम ना आए। अब देखो हिंदी में थोड़ी सी टूटी फूटी बोलता हूँ, बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे को थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको डाइजेस्ट कर लें। However, I would say quality is something you can say weightage in your talk and work. If there is no weight in your personality, in your generality, in your destination, in your totality, in that case, there is no meaning at all. If what you think you do and what you think is respectively relative, it is useful, it is set or focused to subject. Subject is made an objective by your thinking. That is very significant part of your personality. As a person, you should have privacy, you should have generality, you should have destiny or objective, and you should have totality. These are my own conception, because what do you think you are a person that time? You cannot think for others, and others can also not think for you. You have to think yourself, and you have to think also how does it relate or impact on others. What do you think about? And also you think according to your mental status, mental capacity, what sort of mind one has got.
and that is too significant for every consideration. Thinking, concentrating, coordinating, moving on that every coordination, every thinking, and then doing something useful always give better results, useful results, which can be further improved to have further better status, which status can lead to some solid or concrete gain. Citizen of this country is very innocent, and also every citizen can be swayed by others. Swayed, you understand? Move from this direction to that direction without application of mind. हम अपने मस्तिष्क को ना अप्लाई करके किसी के कहने पे इधर से उधर हो जाएं, उससे हम काम करें आगे, जो चाहता है अपने दिमाग को छोड़ के उसके दिमाग से चलें, उसको हम क्वालिटी नहीं कह सकते। मैं किसी के दिमाग से क्यों चलूं जब भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है? हाँ, एडवाइस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा दिमाग वाले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सजेशंस को मान लूँ। मेरा दिमाग में अगर वो सजेशन आता है, ये सही बात कह रहा है, एनालिटिकल बात कह रहा है, रीजनेबल बात कह रहा है, जो मैं नहीं सोच सकता था, तो ठीक है। लेकिन अगर ये वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या? एनालिसिस किस चीज़ का? माय डियर फ्रेंड्स, country is very important for everybody, but before that world is also important. हमारा देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह विश्व। ये विश्व, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, पृथ्वी माता जिसको बोलते हैं, और ये सिस्टम जो इस वर्ल्ड को चला रहा है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, हालांकि हमें इतनी कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी नहीं है कि हम इसका ध्यान रखें। Nobody has got that much capacity who can think for whole nation as well as who can think for whole world. Nobody is so powerful, and nobody has born so powerful. World is very big because world is not planet only. World is whole solar system and universe, though we do not understand except Earth. And Earth also we do not understand very well. That's why I say qualitative thinking is important. A citizen has to think how to run this country, and every citizen of every country must think about that country. Every country has got resources. Every country has got sources. Every country has got human resources, material resources, capability resources, capacity resources, and whatever kind of considerate resources one can say, every country has got. Some has got more, some has got less. And what citizen means? Citizen is unit honor of this country, on every country. We are in this country, Bharat India. We are, you can say, sovereign at one end and republic on other hand. Sovereign, republic, sovereignness at one end and republic status is at other end. And in between is socialist, secular and democratic. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। हमें ये समझना है कि हम किस स्थान में, किस देश में और किस शक्तियों के साथ रह रहे हैं, और मैं इनको शक्ति कहूँगा। दीज आर पावर्स। बीइंग ए सॉवरन इज पावर, बीइंग ए रिपब्लिक इज पावर टू एवरी सिटीजन, बीइंग secular, socialist and democratic, all these are powers. Then why I should not think about these? एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से मैं इन पैरामीटर्स पे क्यों ना बात करूं? और ये पैरामीटर्स क्या हैं? कि हम प्रभु सत्ता संपन्न हैं, हम गणतंत्र हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम सामाजिक हैसियत वाले हैं, सोशलिस्ट हैं, और हम डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। कहने को तो ये शब्द हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये हमारे देश के नागरिक की आत्मा है। कितना बड़ा स्टेटस है एक नागरिक का, उसको सोचना चाहिए। संविधान ने ये स्टेटस दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर्स हैज गिवन अस दिस स्टेटस टू आवरसेल्व्स, बाय आवरसेल्व्स। We people of this country have resolved this
this must, our society to stand like this, and we ourselves have given to us, approved and adopted this, and ultimately it's our document, which is number one in terms of law. And this is, if you are, if you are sovereign, means you are king or a part of king. You cannot say king absolutely, but the one over number of population of this country, that kingdom belongs to you. 1/130 या 140 करोड़ की वो वैल्यू राजा की आपके पास है, और वो वैल्यू जो वोटर की है, शायद आधे वोटर तो होंगे, आधे या 60%, उनकी वैल्यू एक राजा से भी बढ़ के है, क्योंकि वो राजा को अपॉइंट करने जा रहे हैं। आप तो ओरिजिनल राजा हैं और वो डेलीगेटेड राजा हैं जो सीटों पर जाके बैठेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच तो यही है। सबसे बड़े राजा आप हैं, चक्रवर्ती सम्राट। 1/300, 1/130 करोड़ आप चक्रवर्ती सम्राट हैं इस देश के लिए। आप मजाक समझेंगे इस बात को, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। मैं इस देश का 1/130 करोड़ राजा हूँ, और आप भी हैं। मैं इस देश का गणतंत्र बनाने वाला व्यक्ति हूँ कि यहाँ पर हम जो चाहते हैं, गण जो चाहते हैं, सिटीजन जो चाहते हैं, वही होगा। ऑफ कोर्स सबकी सबकी एग्रीमेंट से होगा, मेरे एक के कहने से नहीं होगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं लॉ का आदमी नहीं हूँ, परंतु समझ से अपने बता रहा हूँ। और फिर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सेकुलर, जिसका लोग मजाक बना देते हैं कि सेकुलर का क्या मतलब है। अगर आप मतलब नहीं समझते तो मजाक क्यों बनाते हैं? माई क्वेश्चन इज दैट इफ somebody cannot understand meaning of secular, why that person makes fun of that? This is called childish conduct. आप कितने भी बड़े नेता होंगे, कितने भी बड़े प्रोफेसर होंगे, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, क्योंकि आप एकेडमिकली बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं चलेगा। मैं किसी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट or political party. I'm inclined to talk about as a citizen of this country to tell what is fact. And fact means that secular means something different. Of course, it relates to religion or sect or faith, but it also relates to super status to that one, and that is whatever has been happening for centuries and centuries in this country. And if doesn't harm others or other sections of society, then this is secular. It can be ritual, it can be convention, it can be understanding, it can be whatever. Means where you are not going to damage other sections or cult or society, and you do some ritual. You say, okay, this is my family culture, this is my social culture. That's fine. You have a right to do that. To an extent, it doesn't impact adversely on others. दूसरों का ये दुर्व्यवहार ना करे, उसको हम कहते हैं सेकुलर। उसमें खाली ये नहीं कि धर्म ही सब कुछ है। धर्म को मानना ना मानना व्यक्ति के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, या किसी भी दूसरे ग्रुप के हाथ में नहीं है। आप किस धर्म को मानते हैं या इसको नहीं मानते हैं, आप किस संस्था के हैं, आप किस जाति के हैं, आपके यहाँ शादी किस तरह से होती थी, आपके यहाँ किस तरह का कल्चर चलता है, आप कैसे जीते हैं, ये आपको देखना है। किसी सरकार को नहीं देखना है, किसी देश को नहीं देखना है, जब तक कि आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार किसी दूसरे का नुकसान ना कर दे। सेकुलर का मतलब ये होता है। अगर वो डर्ट है सेकुलर के अंदर कोई रिचुअल, तो उसको हटाया जा सकता है, और कोई अच्छाई है तो उसको लिया जा सकता है। तो हमें ये बात सोचना होगा। ये सोचेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये तो रही बात सेकुलर की। फिर आ जाते हैं सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पे। सोशलिस्ट शायद लोग समझते नहीं है कि क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। डेमोक्रेसी तो सब लोग समझते हैं कि वोट देना डेमोक्रेसी है, जबकि इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वोट देना ही डेमोक्रेसी है, ये बात एक्सक्लूसिव नहीं है। I understand what is meaning of socialism, but people in general do not understand. People in general do not understand meaning of democracy. They only understand vote exercise.
And I avoid republic because republic everybody knows that is day of people, day of public, or you can say when king left our country, kingdom left our country, we became our own self rulers and self motivators. Means everybody is an integrated part of this country, this society, India, Bharat, and whatever government is to be elected through parliament, and whatever is parliament, Lok Sabha is to be elected by, those people are in fact republic because they themselves are having power to be named self kings of this country. So kingdom means ownership of this country here, and socialist means that this is a society of people. Everybody has equal right in this society. Nobody is superior and nobody is inferior to extent of consideration of citizenship. You may be very rich, but you are citizen of equal status. You may be very, very rich, you may be very powerful, but to an extent citizenry is concerned, you are all same. But does it happen? Do government treat that way? Do courts treat that way? We have to look into every aspect. But before that, we have to understand socialism. In fact, society integrity, society movement, society its own consideration, and status of society, you may say that everybody has a right to eat, to live, and to have general maintenance expenses. That is what we say socialism. Nobody is expected to have starvation. Nobody is expected to not to have education and of course health, and one has a right to live comfortably without worries, without any concern, just thinking that this country belongs to that person, and also think that world belongs to you and you belong to world. Both are reciprocally correct, and that's what I say. Quality definition always varies. In one talk, I cannot explain that, which is impossible. I can express my views only, and those views must be analyzed by press or by YouTubers, whosoever. But how many do it? That is also a question for understanding. Just stating that we should have quality is not enough. We have to teach people, we have to teach our citizens in this regard, otherwise, we cannot get anything positive. Teaching people in a way that people realize, because I have seen, experienced that habit of people to read documents or to read books or to think on has died. Reading habit has died, writing habit has died, interactive habit has died, interactions have died. So what is left? सब कुछ मर गया, पढ़ने का स्टाइल मर गया, पढ़ने की शौक मर गई, लिखने का तरीका मर गया, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका मर गया, लोग बातचीत ही नहीं कर रहे, चैटिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, लेकिन अपने परिवार में इन्वॉल्व नहीं, अपने मित्रों में इन्वॉल्व नहीं, उनके वो मित्र जो भी है अननोन है, फेसबुक के मित्र हों या यूट्यूब के दोस्तों वीडियो हो या कोई भी हो, व्हाट्सएप हो, सब काल्पनिक दुनिया में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक दुनिया है उनके सामने बहुत कम आगे आते हैं। ये भी एक हिस्सा है क्वालिटी का कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सच है कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया में एक तरह से सबको एक्सेस दे दी। आप किसी भी देश के बारे में अपने घर से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। वो अलग बात है कि सेंसर होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। इससे भी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है कि आप इसको किस तरह से कंडक्ट करते हैं। क्या आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं या बस आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे? किसी को कुछ भी बोलने का हक आपको किसने दिया? ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं दूसरे को बिना जाने हुए कि दूसरा कौन है, कैसे है।
अपनी माँ को मैं बात नहीं करना चाहता, अपने पापा जी से मैं बात नहीं करना चाहता, अपने भाई बहनों से मैं सुनता नहीं हूँ, वही मैं बिजी हूँ, थोड़ा चैटिंग कर रहा हूँ। चैटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ जाए तो घंटों भी चले तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे अपने भाई की, अपने बहन की, अपने माँ-बाप की चिंता उस समय के लिए नहीं होती। क्या ये क्वालिटी है? क्या ये, और ये तो यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉब्लम सर्वाइव्स, दिस प्रॉब्लम एक्सिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। बट देयर आर सम गुड पीपल आल्सो इन सम सोसाइटीज़ हू टेक केयर ऑफ दिस। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है सोचने वाला कि भाई इतना भी मत यूज़ करो इन चीज़ों को, इन फैसिलिटीज़ को, कि आप अपने घर से मेंटली स्पिरिचुअली सेपरेट हो जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर आपके लिए है, देश आपके लिए है, दुनिया आपके लिए है। तो उससे दूर तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, जो भी कह लीजिए आप, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ। अब चाचा ताऊ तो कोई कहता नहीं, वो जमाने तो चले गए। अब तो अंकल कहा जाता है, या फ्रेंड और अनफ्रेंड कहा जाता है। फ्रेंडशिप दे दो, अनफ्रेंडशिप दे दो। आजकल की लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। इंटरनेट ने असली लैंग्वेज को गड्ढे में डाल दिया, दबा दिया, बरी कर दिया, और अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही स्क्रिप्ट शुरू कर दी। कोई बात नहीं, हम इस चीज़ पे भी ज़्यादा गलत बात नहीं करेंगे। जैसा चलता है चलने दो, लेकिन पर्सनैलिटी तो होनी चाहिए। अच्छे कपड़े पहन लेंगे आप तो अच्छे सिटीजन हो गए क्या? स्किन टच चाहिए मुझको, मुझे हाथ में पर्स चाहिए, हाथ में बहुत स्ट्रांग मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए। अच्छी बात है, बधाई हो आपको कि अगर आपको ये मिलता है या आप अरेंज कर सकते हैं। पर क्या ये आपको स्टेटस देगा? व्हाट डज स्टेटस मीन? कैन यू गेट स्टेटस बाय ऑल दीज फैसिलिटीज वी हैव? पद क्या है? स्टेटस का मतलब पद वैसे नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं आपका सामाजिक पद, आपका क्वालिटी पद क्या है? अभी सोच के देखिए, थिंक ऑन दिस, व्हाट्स योर क्वालिटी स्टेटस? इफ यू डोंट गेट एनी क्वालिटी स्टेटस, देन व्हाट्स मीनिंग ऑफ दैट? आई एम a person of this character, I am a person of this state. Where is status? That's why I say, when I'm talking of quality, there is some fundamental acceptance of this in society. There's something we have to understand, and before understanding, we have to analyze. We have to link together various requirements of what we talk. We use many words, many phrases, and this should also be linked to required coordination. It's not simply I've said and that's acceptable. No, it should be analyzed properly, and analysis is that procedure which gives someone, at least tells you're right or you're wrong. That is very important. I should not go against that. So, my dear, when I talk of quality, I talk of whole quality. I don't talk of part quality. I don't say, okay, I test this material and this material is acceptable, we accept that. People usually say, and that is different. The lower part of quality is not really, yeah, at quality level, it is not really, you can say, stronger than quality, but it's the lower part of quality. गुणवत्ता को समझना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मुझ में ये गुण है, वो आप भी जानते हैं, और जो आपका साथी वो भी जानता है, और जो उससे डील करेगा थोड़ा बहुत तो वो भी जानेगा। What quality one has, that one has to analyze itself to know, and those who come in contact and deal with that person, they also know to some extent what sort of person is this. And that question is, what sort of person are you? It means you are either lamenting upon you tauntingly something which should not be done, because work tells what is worthy, conduct tells what is quality, mental status tells what is quality, and you see, respecting and regarding others selves quality. We should not forget we are working for God, we are working for society, we are working for our nation, and at end we are working for whole universe. We may not exceed. I may not go to space on my own, but we can think of space, and that is where access is. Thinking does not need any fighter plane, any commercial plane. It doesn't need any vehicle, because mind itself is tremendous, powerful vehicle
which does not need any fuel. Fuel is itself available because it comes through your food, your mind, and if mind is stronger, there can be no response, there can be no answer to question. I don't raise question, I cannot raise question if I understand that this person is very brilliant and this person should certainly respond to. And if that situation comes and it's sincerity based, I would say it's fine. That is called quality element. If we got quality element in ourselves, I think nothing equals that. Nothing equals that in this scenario in 2023. First of all, quality should be considered as a part of your life. If you don't think that quality is part of your life, in fact, I would say you don't have any life. You're living for sake of living only. You have no initiative in yourself, no proaction to understand, and you can say then science stops because you have no capacity so to do. Quality cannot be defined in one line because quality is very descriptive. But we have to understand one thing that we have to confine every requirement, every definition, and that definition is we have to be citizen first with quality. If I don't have quality in myself, then I curse myself. What sort of citizen I am? Citizen means you are honor of this country from many points of view. You are liable to mistakes. You are liable to damages if you make to this country, and you are also liable to yourself because first of all, one should be truth based. Satyamev Jyate. Satyamev Jyate is for every citizen. If truth prevails in you and you respect truth, well, I think you will be best person, but others won't like you at various occasions. आप कितना भी सच बोलें, सच पे विश्वास करें, सच पे विश्वास करेंगे और जो लोग सच पे विश्वास नहीं करते वो ज़्यादा होते हैं, जो सच पे विश्वास करते हैं वो कम होते हैं। आपके सत्य का वेट तभी होगा जब आप में कैपेसिटी होगी, आप बोलने की शक्ति रखते हैं, आप लिखने की शक्ति रखते हैं, आप किसी को फेस करने की शक्ति रखते हैं, तब तो आप ट्रुथ पे आगे चल सकते हैं और आप ट्रुथ बेस्ड पर्सन हैं। और लोग आपको लाइक करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ एज सिटीजन, मेरी कितनी क्वालिटी है। जब मैं मेरी कह रहा हूँ, मेरी मीन्स सबकी है, ये सबकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन। वॉट इज़ माई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, what can I do for whole world, what should I do, all these we have to consider. Consideration of quality is very complicated and also it is very easy because we used to call character in decades back. What character do you have? And I'll say that character is substitution, quality substitutes that. That can be said. But everything in character cannot be applied to quality because character also amounts to privacy, amounts to private properties of the person. So we should say quality presence in a person and use that quality presence in work. You can get so many successes. And these successes will continue because when you think of quality, you think yourself. It's not emotional based quality. It's not emotions. It is application of mind. हम दिमाग की कार्रवाई कर रहे हैं। जब सोच रहे हैं तो मस्तिष्क सोचता है, शरीर नहीं सोचता। एनालाइज भी मस्तिष्क करता है, शरीर नहीं करता। कंसंट्रेशन भी मस्तिष्क करता है। इसीलिए हमारी शिक्षा, एकेडमिक्स, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है शिक्षा से। और शिक्षा का मतलब फॉर्मल शिक्षा से नहीं मैं कह रहा, किसी भी शिक्षा से तो जॉब ट्रेनिंग में आए, आपको काम सीखने में आए, कुछ भी करने से आए, डू वट एवर यू वांट एंड यू गेट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड यू गेट ट्रेनिंग एंड यू से यू हैव गॉट लोअर मिडिल management capacity or senior management capacity,
and you can understand what is to be done with justification, well, I would say that is best requirement, best solution. If quality is improved, improvement can be brought to life of nation, improvement can be brought to life of world, and to particularly to place yourself, you need something for you, some food for you, and that is where I say quality, citizenry is very significant, which even a child must understand. At age of development, child cannot understand immediately when is born. It takes frequent months for parent of child, particularly mother, senior to me, and that's responsible for whatever happens. That is what I should say, that we have to analyze it accordingly. And if we don't analyze like this, we lose on something. I I start quality here because I did not find quality. Education is one part, but quality level education is another one. We should relate ourselves to quality in different mode. I talk quality on subjects, on testing materials construction, but that is one field of quality. We have to talk about every field in society. Like I was talking about this in this case, there will be more talks related to something else. It doesn't link to politics, in fact. It doesn't link to politics. I'm not talking politics. I am talking humanship. I'm talking quality of citizen, and citizen is also same all over world. I I say I'm world citizen. I think that there is nothing wrong. To my understanding, there is nothing wrong. Of course, I don't have any document which evidences that I am world citizen, but my citizenry document evidences that I am citizen of this country, and because I am citizen of this country, I am citizen of this world. This means no country has any right to demand passport of world citizenry. World citizenry is your pride, should be pride, because you are here on surface of earth and lithosphere, you can say. Lithosphere is something that demands solidity in every act, every backflip, every motion. One expects what is quality. One has to understand this point. And if I don't understand this point, my mind would ask me again and again, what is happening to you? And particularly those people, those citizens who are educated professionally or otherwise, who have got degrees, who have got experience. And I would request those citizens to take responsibility for society in whatever way it will be better. Quality has no limit, first of all. I am really very concerned for quality because it is very, very difficult if you are constructive to lead life. If you have a mind that believes in destruction, you are a different person. Means you can enter sabotage also. If chance is given to you, you can go to that extent also. And that's why I say it's not right way of consideration. I will not go more than 35 minutes because of various reasons. I don't want to bore you first of all, and I don't have any document to show to you on YouTube. Let me wait for a few days because Facebook has restricted my live videos due to reason of one post in which I showed Hezbollah, Lebanon, and I did not know that that person is banned, and because of that, I was punished. Punishment in the sense that my life had been suspended
for 29 days. I remember it was 6th morning, so maybe around 4th or 5th of September, I'll be reinstated to use live Facebook, on which I can conduct, I can do screen share, which is very significant one for me. That function I not seen on YouTube, and we'll see. It's only a couple of days now left. It's 27th, so you can say 4 days here, and maybe 5 days next one, 9 days, or you can say more than a week. I hope that we by that time we shall see in YouTube. It's better sometimes because YouTube is good one, but screen share is not available in this. So my dear friends, I like to take your leave, or I appeal everybody to think on citizenship value. Only then we can say something. Jai Bharat, आप सबका धन्यवाद. Thank you very much. I will see you tomorrow if time permits. By that time, enjoy your thinking power.